Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Mathematical Techniques for Boundary Value Problems MS first and third semester, today we will start our fourth online lecture, and in today's lecture we will extend the method of Lensted-Poincaré technique for the solution of ordinary differential equation, and we will consider one or two examples, and we will see how we can apply this method to find the solution of ordinary differential equations. This is our first example, and you know that in Lensted-Poincaré techniques, as we see in our last example, that the straightforward expansion in power of epsilon when applied to an equation of this form, u double dot, यहाँ पे u prime हो या u dot हो, it means the derivative of u with respect to t. u double dot plus omega naught square u is equal to epsilon f, which is the function of u, and u dot u prime are valid only for the short interval of times because of the presence of the secular terms. हमने देखा था कि अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं तो solution of this equation 3.1.1, which was a Duffing equation, is valid only for short interval of times. For long interval of time, when a time is approaching to infinity, the solution was unbounded and it contains a secular term. Then, according to the Lensted-Poincaré technique, which says that we can expand both the dependent as well as the independent variable in powers of epsilon. Therefore, according to the Lensted-Poincaré technique, we will use this expansion for the time t is equal to, you can use tau और s. यहाँ पे मैंने पैरामीटर s यूज़ किया हुआ है, बुक में s था तो आप tau भी यूज़ कर सकते हैं. That doesn't make any difference. So t is equal to s or tau into 1 plus epsilon omega 1 plus omega epsilon power 2 omega 2 up to so on. This is the equation 3.1.2. So basically this is the expansion for independent variable, और आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप वही एक्सपेंशन यूज़ करेंगे. फॉर u वी विल यूज़ u नॉट प्लस एप्सिलॉन u1 प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर u2 up to so on. Therefore, in order to find the solution of this 3.1.1, we will use the time expansion given in equation number 2 and the expansion for u, which is, you know, that is given by equation number 3.1.4, which is summation n0 to infinity epsilon power n un of s. एंड अगर आप इस एक्सपेंशन को, इस सीरीज़ को ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी u नॉट प्लस एप्सिलॉन u1 प्लस एप्सिलॉन 2 u2 अप टू सो ऑन. अब इस टाइम की ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हमने 3.1.2 डिफाइन किया है, इसकी मदद से हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्रांसफॉर्म आवर गवर्निंग इक्वेशन into new variable s. Our new independent variable is now s. So first of all we have to take the second order derivative, which is written over here using the chain rule. आपको पता है du by dt will be equal to du by ds and ds by dt, and secondly d2u by ds2 will be equal to d by d s of du over dt and dt over ds. So that will be equal to d2u by ds2. तो आपके पास जो इक्वेशन होगी 3.1.1, that will be written in 3.1.3. तो आप क्या करेंगे कि आप इस इक्वेशन के जो लेफ्ट हैंड साइड है डबल डेरिवेटिव, उसकी जगह ये टर्म आ जाएगी. जो अगली टर्म है आपके पास वो सिंपल होगी, उसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है. दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर u, और राइट हैंड साइड पे भी एप्सिलॉन f अपनी जगह, u अपनी जगह, और u डॉट की जगह हम ये चेंज ऑफ वेरिएबल से जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन आती है वो पुट कर देंगे.
और इसमें आपको पता है कि जो हमारे पास रेगुलर एक्सपेंशन u के लिए है वही हम यूज़ करेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग 3.1.4 into equation number 3 and we will equate the coefficients of the like powers of epsilon. We will obtain equations from where we have to determine um in succession. Means u0, u1, u2 up to so on. The solution for contains secular terms unless the omega m have specific values. ये जो आपके पास के solution आएंगे they contain the secular terms, और ये secular term आपके पास किस वक्त remove होगी? ये secular term आपके पास उस वक्त remove होगी जब आपने ये जो टाइम पे एक्सपेंशन ली है इसमें से आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास सिंगुलर टर्म जो है वो रिमूव हो जाएगी। This is the whole story of this method. So now we will consider this first example, equation number 5, d2u by dt square plus omega plus epsilon u क्यूब इक्वल टू 0। अब आपके पास फंक्शन की वैल्यू आ गई है विच इज़ यू क्यूब, एफ ऑफ यू डॉट जो है हमारे पास वो क्या हो गया, यू क्यूब आ गया है। तो अब हम इस मेथड की मदद से इस इक्वेशन के सोल्यूशन हम निकालेंगे। So using the transformation for time defined in equation number 2 of the previous page, we can write this equation 5 in new independent variable s as d2u by ds2 plus 1 plus epsilon omega 1 plus epsilon 2 omega 2 up to so on whole square, and this is equal multiplied by u plus epsilon u cube. Now we will substitute u is equal to u naught plus epsilon u1 plus epsilon 2 u2। अब इस इक्वेशन नंबर 6 में आप u की जगह एक्सपेंशन पुट कर दें, एप्सिलॉन u नॉट प्लस एप्सिलॉन u1 प्लस एप्सिलॉन u2 अप टू सो ऑन, और उसको इस इक्वेशन नंबर 6 में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ द लाइक पावर्स ऑफ एप्सिलॉन वी विल गेट दीज थ्री सिस्टम्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। फर्स्ट equation 7 is corresponding to the coefficients of epsilon power 0, equation 8 is corresponding to the coefficient of epsilon power 1, and equation 9 is for epsilon power 2. Now we have to find the solution of these equations, and you know that if you will find the solution of equation 7, then its solution will be given by u naught a cos s plus 5 where s is the independent variable। आपके पास ये आ जाएगा where a and phi are the constants of integrations। Now putting equation number 10 in equation number 8, we will get this second order equation for u1 given in equation number 11। if a straightforward perturbation expansion is used, ये आपने निकालनी है, ये आप राइट हैंड साइड पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे u नॉट की, तो आपके पास ये आ जाएगा omega n is equal to 0, then equation and 3.1.1 reduces to 7 whose particular solution contains secular term. In order to avoid this secular term, omega 1 is chosen to eliminate the coefficients of the cos s plus phi on the right hand side of 3.1.11. This solution determines, अब आप क्या करेंगे, आपके पास जो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास 3.1.11, इसके जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास सेकुलर टर्म आएगी। उसको सेकुलर टर्म को अगर हमने इक्वेट करना है, उस सेकुलर टर्म को हमने रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ओमेगा 1 है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें कॉज एस प्लस फाई की जो टर्म्स हैं वो दोनों साइड पे इक्वेट करेंगे। ये जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, आपने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने फाइंड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। देयरफॉर in order to equate the secular terms, to get rid of the secular terms, we will equate the coefficient of cos s plus phi, and from where we will get the omega 1 is equal to minus 3 by 8a square।
ये काम आपने करना है, क्योंकि आप यू कैन फाइंड द particular solution of this equation and as well as the complementary functions. complementary function तो बहुत आसान है और particular solution आप इस equation का find कर सकते हैं because your independent variable is s. Therefore u1 will be given by 1 by 32 a cube cos 3s plus 5 and as a result we will get the value of u1. अब u1 और u0 की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास u2 में ये इक्वेशन आ जाएगी where NST stands for the terms that do not produce secular terms. जो टर्म में सेकुलर टर्म नहीं प्रोड्यूस करती उनको हम NST में डाल देंगे. And in order to eliminate the secular terms we will choose omega 2 will be 51 over 256. अगर आप इसके कोफिशेंट को ज़ीरो कर दें तो वहाँ से आपके पास ये ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 2 ओमेगा 2 विल बी 51 ओवर 126 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओमेगा 2 विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन. देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u1 u0 the required solution u will be given by equation 3.15 where a and theta are the constants of integration which are determined, where omega is determined by omega 1 and omega 2. By putting the value of omega 1 and omega 2 the whole expression for omega will be given by this equation. So this is an illustration of the Lindstedt-Poincaré technique in which you have to expand both t and dependent variable u, and then you need to determine the coefficients appearing in u so that in omega so that you can remove the secular terms and the solution will take the form given in equation 3.1.15. That's it for today's lecture. Thank you very much.